हुआ उन लोगों का? Yes, sir. Sir, there is an article in Indian Express, the path to 2047. सौर्य को डेंगू हो गया है। हेलो। Yes, sir. हेलो भावना। हेलो। Yes, sir. Am I audible? हाँ, सौर्य को डेंगू हो गया है। Oh, I'm sorry, sir. हाँ, तो 2-4 दिन लगेगा उनको। क्या हुआ आकाश? क्या हुआ नीलिमा का और कमलदीप का? आकाश? Yes, sir. क्या हुआ नीलिमा का? सर पता नहीं, मतलब मैं बात नहीं कर रहा हूँ उससे। अच्छा, ओके, ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ Sir, in Indian Express, page number 14, the path to 2047. ओके, क्या है इसका खास बात? Sir, it is an outline of the entire budget expectations and how it should be. It's a very nice article, sir. Yes, yes. क्या एक्सपेक्टेशन है? Sir, previously the author has given a hint of how the previous two budgets, what they have focused on and what this budget should focus on. It should focus on capital expenditure, especially in infrastructure and job creation. Okay. Sir, other than Sir, other than this also there are many other aspects which the author has focused on with respect to increasing the employment, exports, wherein and how we can stick to the fiscal deficit target. Okay. And other than this, what are the challenges are also mentioned, sir. So it's a complete article. इस आर्टिकल में ऐसी कोई चीज बताओ जो तुमने डिस्कस नहीं की हो पहले? Sir, there is nothing that we have not discussed. Yes, so that's I want to tell you. So it is like a revision. That's I want to tell you the power of discussion. He is a very high standard writer. I know him. मैंने वो बहुत पढ़ा है. But you see, most of the things we have written, you know it. Yes, sir. Only thing his writing, जैसे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे कि न करे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बगैर इंक्रीज किए आपका जॉब क्रिएशन नहीं हो सकता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। फिस्कल डेफिसिट एक सीमा से ज्यादा कम नहीं करे, फिस्कल डेफिसिट तो रहेगी। अगर फिस्कल डेफिसिट नहीं करोगे, अगर फिस्कल डेफिसिट नहीं होगी तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? मतलब आप फिस्कल डेफिसिट ही कंट्रोल कर ले, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करो बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द ग्रोथ। एक्सपोर्ट की बात हम लोग लगातार कर चुके हैं। जरा कब एक्सपोर्ट पढ़ो, जस्ट रीड हिज एक्सपोर्ट आइटम, just see the export part. What is saying? Sir, in that he mentions that we should have a consistent trade policy regime, and we should also look into the global value chains. Focus on look east policy. And another thing is about the inverted duty structure. So except inverted duty structure, सब चीज आपने डिस्कस किया हुआ है. Yes, sir. एवरीथिंग. आप इस आर्टिकल को बगैर पढ़े इस आर्टिकल की तरह का आंसर कर सकते हो आप. लास्ट पैराग्राफ क्या है इनका देखो, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है जो उन्होंने लास्ट में इंडिया की एक पावर बताने की कोशिश की है. ये आपके इंटरव्यू में सबसे ज्यादा काम का है. 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओवरटेक जर्मनी, जापान. 3rd largest economy. India ranked 142 after 197 countries on per capita income, as former RBI Governor Rangran mentioned recently. India has no choice but to grow fast given the present level of per capita income. The role of state is equally or more important in raising growth and jobs. It is the most important part, he said. What this said,
एक चीज क्या बोला कि इंडिया का जो रैंक है 142 है आफ्टर 197 ऑन पर कैपिटा इनकम। लेकिन इंडिया की पावर क्या है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है, जर्मनी जापान को ओवरकम करेगा ये एक डिकेड में। और सबसे लास्ट बोल क्या है, हमको ग्रोथ और जॉब दोनों ही क्रिएट करनी है, बढ़ानी है। हाउ यू कैन क्रिएट ग्रोथ एंड जॉब, कम ऑन दिस नाउ, this part of the this part he has answered earlier, growth और job के लिए क्या करना, two thing important, come on, how you speak in the interview, in the growth, for the growth and job, आप लास्ट पैराग्राफ को लेके आप बोलो इंटरव्यू में कैसे आंसर करोगे। Sir, main thing is to create labor intensive jobs and jobs which provide quality employment, and both of these can be done with the help of states. If the state government also involves adequately in creating infrastructure and capital expenditure, thereby providing employment. एक चीज उन्होंने और बोली है, आप चाहे लिख लो, द हाई ग्रोथ रेट्स इन 2000 in India was mainly due to high level of private investment. Private sector capex is showing a recovery after 2 years of the pandemic. The twin balance sheet problem has receded now as the companies are deleveraging and banking sector has cleaned up its balance sheet and credit growth is around 17%. और उन्होंने जो PLI स्कीम जिसके हम लोग कल बात किए थे, उन्होंने फिर उसका जिक्र किया हुआ है। Yes, sir. फिर क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, अचीव प्राइस, फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंश्योर पॉलिसी सर्टेनिटी, इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। ऐसा उन्होंने क्या कहते हैं, आपको नहीं पता था, आप सब जानते हो उसको। आकाश, आकाश, यस सर, आप यही चीज बोलो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। यस सर, what steps should be taken so that India may come up a very strong economy in next 10 years? Sir, first we may focus on capital expenditure to increase our capacity in terms of like logistic capacity as well as in competitiveness with regard to export. So second, we may focus on labor intensive industries like textile, leather, etc. So we can provide a quality job for the citizens, as well as sir, we have to focus on ease of doing business, and for that we have to promote, we have to create the policy which is very business friendly, as well as we have to also focus on sir export. For that we can also explore reviewing and restructuring our special economic zone as well as our industrial policy. And sir, also we have to focus on reducing disguised unemployment in agriculture. And sir, yes sir. Bhavana, आप बोलो, same question. Sir, firstly, we should focus on increasing the capital expenditure, especially where it is required, that is in infrastructure. And more so by doing that, we should attract more private investment also. And the most important aspect is to create labor-intensive quality employment, wherein the demographic dividend can be adequately harnessed to provide a good quality of life for everyone who is staying in India. So it will be growth along with development, sir. इसी को फिर से बोलो दोनों आदमी अगेन, पहले आकाश, फिर से बोलो। बोलते समय आप ध्यान दो, जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में आप बोल रहे हो, ठीक है ना? हाँ, चलो, यू प्रिज्यूम योरसेल्फ यू आर इन द इंटरव्यू बोर्ड, जैसे आपको चेहरा बनाना है, हाथ बनाना, वैसे करो, सेम वे यू ट्राई टू स्पीक, सेम। Yes sir, for growth we have to focus on capital expenditure, so we can create robust infrastructure which also helps in reducing our logistic cost as well as our competitiveness. And for sir, we have to focus on labor intensive sector as to reap our demographic dividend.
And sir, we have to focus on social sector like health and education and quality skill development program, so we can, sir, utilize our demographic dividend much efficiently, and we can achieve the growth in a two digit, as well as we can reduce our unemployment rates. इम्प्रूव हुआ ना, पिछले से बेहतर है ना ये? Yes, sir. भावना बोलो। Sir, to improve and to grow as an economic power, firstly, we should bring the long-term structural changes by in spending more on capital expenditure and investing more in infrastructure particularly. Another aspect is with respect to improving the private investments in India. After this, we need to tend to reduce the disguised unemployment which is present in agriculture, to remove the workforce from agriculture and provide them with adequate and quality employment opportunity in manufacturing, industries and service sector, whereby we should go for a labor intensive led growth. फर्क है नहीं आया? बेटर Sir, हुआ? yes sir. देखो ना, प्रैक्टिस के अलावा कुछ है ही नहीं है। आपका ये आंसर जो है दोनों आदमी का इंप्रूव कर गया, मेरे ख्याल से हो गया। कुछ है बचा इसमें? Sir, there is nothing. हाँ, but चलो, ये आर्टिकल क्या है ना, देखो आर्टिकल पढ़ना फास्ट भी है, मैं बहुत फास्ट पढ़ गया इसको, और पढ़ते ही मैंने कंक्लूड किया कि आर्टिकल में कुछ बचा ही नहीं है ऐसा कुछ डिस्कस करने को। व्हेन यू सेड सर, अच्छा मैंने पूछा इसमें क्या है बताओ मेरे को, सब रिपीटिशन था इसमें। Sir, it was like a revision for whatever we have learned. yes. इवन नहीं क्या ना, आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की स्पीड फास्ट हो गई है, आपने तो बहुत फास्ट पढ़ा होगा, अब बहुत जल्दी दिमाग कह दिया होगा। देखो दूसरा क्या है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि यार मैं तो चीजें जानती हूँ। जो एस महेंद्र देव ने कहा वो हम तो जानते थे, हमको आता था। तो जहां आपको लगता है किसी बड़े राइटर की लिखी चीज मुझको आती है, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यू। Yes sir. Sir, in this sir, in this article they have mentioned about the low participation rates of women in labor market. ये प्रॉब्लम हर जगह है। ये Yes, है, sir. वी हैव टू, आपका एक पॉइंट मिस हुआ था, मैं कहने वाला था कि आपको भावना, आप जो वुमेन सेंट्रिक इशू है उस पे आप ध्यान रखना। जरूरी हर करने के लिए होता है, आकाश के लिए भी है, लेकिन फॉर यू इट इज मोर आर्टिकुलेटिव। तो Yes, वुमेन पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होता, इस पे आते हैं, व्हाई लेस वुमेन पार्ट। इन्होंने एक इशू फ्लैग किया कि जो आप ये भी कह सकते हो हमारी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है, हम अपने मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हमारी एक बड़ी जो मैन पावर है, जो हमारे बहुत बड़ा वर्किंग क्लास है, विच बिलोंग्स टू द लेबर, वो यूज ही नहीं हो रहा है। वी नीड टू टेक देम इन द मेन स्ट्रीम। तो एक आप ये इशू ध्यान रखो कि कैसे हम अपनी जो गर्ल मैन पावर है उसको हम इसमें लेके आए। अब इसका नुकसान क्या क्या है, व्हाट इज द लॉस इफ आई एम नॉट एबल टू यूज द गर्ल मैन पावर इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द इकोनॉमिक्स? Sir, it is like almost girl manpower is around 50% of the entire manpower. So if they are left out from the growth, then it is like the country will be running only on one wheel rather than. एक पहले आप लिखो, एक डेटा आपको तैयार करना है, याद करना है कि कितनी वुमेन्स पार्टिसिपेशन हमारी एग्रीकल्चर में है और कितनी इंडस्ट्री में, कितनी सर्विस सेक्टर में है। इनका एक पैराग्राफ है जो तीसरे में है। The RBI estimated their fiscal impact multiplier for capital expenditure is 1.32, while for total expenditure capital per revenue is 0.72. It indicates that only capex leads to a proportionately higher rise in GDP. इसको आप लिखो। Yes sir, this I have noted. कि जो फिगर याद न रहे, जो आप ये कहो कि सर इट इज ए research of the RBI, it is estimation of the RBI that only capex lead to a proportionately higher rise in GDP. और जो आप कह रहे हो, वर्ल्ड के सारे इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करना होगा
तभी वो जीडीपी में बढ़ोतरी कर पाएगा। नाउ कम ऑन योर पॉइंट भावना, कि जो हमारा हाँ बोलो। Women's participation in rural is around 27% and urban women it is only 14%, sir. ये फर्क क्यों है? So that is because in rural area more women are involved in agricultural activities. Yes. And also because male in rural area they migrate to towns in search of employment. So women are left back, which leads to feminization of agriculture. आप ये कह सकते हो कि in rural areas there is more opportunity for the women to work. लेकिन क्या employment है? ये भी बड़ा सवाल है कि whether the women who are working at the farm और the खेती, क्या वो actual sense में employment है? वो disguise employment है। वहां कम लोगों से भी काम हो सकता है, क्योंकि कोई एवेन्यूज नहीं, इस पे काम कर रही हैं वो लोग। अगर मैकेनाइजेशन हो जाए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाए, तो सब रिडंडेंट हो जाएंगी। Sir, and another issue with farm mechanization is that most of the tools or the tractors, they are not women friendly. Yes, not women friendly. Yes, true. So women don't know how to operate it also. Yes. So right now it is like they are employed only in Manrega or in manual labor in agriculture or domestic help and in kind of jobs like that. उससे आप एक केस और बिल्डअप कर रहे हो कि सर एजुकेशन दिया जाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाना चाहिए। मैकेनाइजेशन हम कर भी दें, हमको सिखाना पड़ेगा। आकाश, आप कुछ कहना है इस पॉइंट पे? Yes, sir. बोलो। Sir, I think the lack of participation of women in economy is like, according to me, there is some patriarchal norms and some social norms and stigma attached with the gender role assigned to like female. So I believe that, sir, due to this assigned role, and that's why the women are structurally like not able to participate in formal economy as well as in informal economy. For example, from the childhood itself, women faces different discrimination based on like in giving opportunity in education or providing quality health services or giving them their what you can say, like independence, or the way they think, the way they feel. They have to like restrict that freedom. So sir, I believe that the low participation of women is due to the patriarchal society, and sir, we have to also address this issue as well. Like then we will able to. Akash, I found you have this concept in mind that there is a patriarchal society. I think these arguments need to be avoided in the interview board because time has been changed a lot. और महिलाओं को जो आप कह रहे हैं उसका अगर सत्य है, बहुत छोटा परसेंटेज है, क्योंकि अगर इस आर्गुमेंट पे आप आओगे तो यू मे बी इन रफ वाटर। मान लो पूछते हैं व्हाट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी, हर जगह तो काम मिल रहा है, महिलाएं पुरुष बराबर चल रही हैं, महिलाओं के एजुकेशन देखिए फर्क आया है, इसमें क्या आप कहते हैं इसमें आप डिफेंड कर पाओगे? आप बताओ भावना, आपका क्या व्यू पॉइंट इस पे? According to global gender gap report, India is like performing very poorly, like with regard to promotion, with regard to opportunity in formal economy, with regard to access to health, higher education. There is a higher dropout at secondary as well as in higher education level. So sir, in that sense, we can say there is a very like health standard, like anemia. 50 like more than 50% women are facing this issue like anemia. So in that sense, we can say that there is still some roots of patriarchy prevalent in our Indian society. भावना बताओ इस पे। Sir, it is true that there are patriarchal norms and stigma which is still attached to working women, and they are not even given a level playing field. The hurdles that a woman has to cross would be more than that of a man. Like it is easy for man to get access to employment or to opportunities, whereas it's a bit more difficult for any woman to access it.
although we have improved, sir, but the improvement, there still needs to be more improvement with respect to women's employment or women education, or even the health aspects of women. Rather than to completely stress on this point, you said, sir, besides things, this is also an issue which society need to address. Although it has been diluted, if not substantially, then to a good extent. But we cannot, but we have to accept it. There are certain norms attached with the women which prohibits them or restrain them to work in the mainstream of the society. तो मेरे हिसाब से इसको जब कहो तो एक लाइटर नोट के टाइप कहो इसको. दिस शुड नॉट बी मेन आर्गुमेंट ऑफ योर आंसर. इट्स अ सपोर्टिव आर्गुमेंट. मेन आर्गुमेंट भी समथिंग डिफरेंट. मेन आर्गुमेंट क्या होगा? जॉब क्रिएशन नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होता है. जहां पर आदमी औरतों को एक साथ काम मिलना होता है, औरतें आप कहीं पे एक मजदूर का काम मिलना हो, आदमी औरत दोनों खड़े हों, तो आदमी को चूज करेगा. आदमी क्यों? क्योंकि वो पावरफुल ज्यादा माने जाते हैं, ज्यादा काम करते हैं. तो बोला सर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. बोला रास्ता क्या है सर? जो औरतों के लिए काम सूट करता है. औरतें स्किल में अच्छी होती हैं, आप स्किल डेवलपमेंट करो. बहुत सी स्किल ऐसे जो गर्ल्स के पास ही होती हैं. तो इन प्लेस ऑफ मेकिंग ए मेन स्ट्रेंथ ऑफ योर आंसर, इट शुड बी अटैच्ड स्ट्रेंथ. ठीक है आकाश? यस आकाश, Yes, गॉट माय पॉइंट? यस सर. इससे क्या होगा ना कि आप जैसे आपने अगर इसको मेन स्ट्रेंथ बनाया, इसी पीछे पड़ गया, तो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे. आपने शुरू में अपने को डिफेंड कर लिया कि साहब ये रीजन है, लेकिन हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी. अब बात सही भी है. हेल्थ नहीं है, दूसरा फैमिली प्रॉब्लम है. भाई आदमी को तो बच्चा पैदा करके पालना नहीं है, इट इज अ जॉब ऑफ द गर्ल. तो ये भी बहुत बड़ा इशू लाइफ में है ना. इवन व्हेन आप जब सिलेक्ट हो गए ना भावना, you also face this also. Being a civil servant, you face this. All girls face this issue. तो ये तो एक समाज की एक संरचना है, ईश्वर ने जो बनाई है, उसमें आप क्या कर सकते हो? तो ये अटैचमेंट तो है ही है. तो हाउ वी कैन ओवरकम? सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो, सोसाइटी गर्ल्स के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो, उनको ज्यादा अवसर दिया जाना चाहिए. Sir? हाँ. The employment opportunities for women, especially in private sector, in fact, most of them are not very open to having women because it will add additional liability for them. Maternity leave is there. And then again, the issue of safety. Yes. So in any safety, working hours. Yes, sir. गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, रूल्स है, आप औरतों से कब काम करा सकते हो, कब नहीं करा सकते हो. तो वो क्या होता है कि वो उल्टा काम करने लगता है. तो जो एम्प्लॉयर सोचता है यार क्यों पचड़े में पड़ने का, जान छुड़ाओ इनसे अपना. ये भी तो आप कह सकते हो ना. Yes, sir. That is the another issue, sir. Yeah, so because of this reason, also women are not finding employment. देखो जो भी आप क्वेश्चन रेज करो उसका आंसर तैयार करो. क्योंकि कहीं बताओ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? बिकॉज यू हैव टू सॉल्व द इशू. तो आप कैसे सॉल्व करोगे? Sir, somewhere there should be certain amount of government incentive which is given to a private company to increase the diversity index in their company, or it can be even taken as a part of the CSR, corporate social responsibility norms, if that can be done. आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट बहुत सी हेल्प प्रोवाइड करती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, while providing the help, the government may say you make a policy which may encourage or enhance the participation of the women in your workforce. बोला गवर्नमेंट बोले कि क्या गवर्नमेंट इंटरव्यू? बोला सब बिल्कुल इंटरव्यू नहीं कर रही है. गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी दी है. गवर्नमेंट के पास एक मैंडेट है इक्वल पे इक्वल वर्क का. गवर्नमेंट के पास मैंडेट है कि महिलाओं को समाज में आगे लाने का. दे आर सेइंग मेक ए पॉलिसी.
I'm not interfering in the policy. Your policy need to be in such a way that it is going to encourage the participation of women in the workforce. That's all. They will come up with the policy. देखो, उत्तर का जो लॉजिक है आपको ही कन्विंस करने लगता है, वही उत्तर दूसरे को कन्विंस करता है, which convinces you. मैं आपको उसी उत्तरों पे कन्विंस कर पाता हूं जिससे मैं कन्विंस होता हूं. मैं कन्विंस आपको नहीं कर पाऊंगा. सेम अप्लाइज टू यू ऑल्सो. तो जैसे आप लोग हाँ इट इज ए कन्विंसिंग आंसर, वो हो जाएगा कन्विंस. और धीरे धीरे प्रैक्टिस, जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते आंसर आने लगते हैं. जो राइट नाउ यू आर एबल टू फाइंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स. पहले ऐसा नहीं था. यस सर. यस आकाश. यस सर. कुछ है बचा, कुछ पेंडिंग है आपके हिसाब से? नो सर, आई थिंक कवर्ड. चलो नेक्स्ट क्या है भावना? Sir, next is the market recent short selling in Adani ये shares. आपके काम का है? नहीं सर. कोई काम का नहीं है, वो मार्केट मैनिपुलेशन है, वो बहुत काम का नहीं है. Sir, with respect to Hindenburg report, the क्या है? article Hindenburg hydrogen connection, green हाँ, hydrogen and its यस, वो तो उसमें था ना, एक्सप्रेस उसमें था बिजनेस स्टैंडर्ड में. business standard. Yes sir. हाँ उसमें वो भेजा था, कहते हैं स्क्रीनशॉट. वो ठीक है. वो किस पेज पे था वो? पेज नंबर नहीं था आपको? नहीं सर. ठीक है, लेकिन वो पढ़ा था आपने आकाश? हाँ, क्या है इसमें बताओ. आकाश सर पढ़ा था इसको? यस सर. हाँ, पहले आकाश बोल लेते हैं. ये आकाश बताओ, क्या बताओ. Sir, basically this article talks about the potential of green hydrogen and the how we can, like, there is an issue regarding production and storage and safety. Like as this hydrogen is very inflammable element, so we have to produce those devices which can handle these inflammable elements very efficiently. And sir, this also talks about recently Adani and different Reliance Limited groups like exploring to produce hydrogen, but they are lagging in like focusing on storage capacity. And sir, and basically it talks about safety and production of hydrogen efficiently. मेन पॉइंट क्या है, सेफ्टी है या प्रोडक्शन है? Safety. Sir, like safely production, sir. हाँ, या भावना चलिए आप बताइए. Sir, like Akash has told, it gives the backdrop of the Hindenburg disaster which happened. So if you are Okay. if you are looking forward to investing in green hydrogen and using it as a fuel, then we'll have to consider this major aspect of our safety, how to safely produce it and store it. Another major aspect is about the investment in the production with the electrolysis of water, and that is also a very costly process. So it is talking about that aspect also, sir. अडानी से क्या रिलेशन है इसका? Sir, the name of the group, Hindenburg Research Foundation, that is one relation. The second one is even Adani Group is thinking of investing in green hydrogen production. पहली बात उन्होंने क्या बोला है, लिखो 3-4 पॉइंट लिख लो. पहला इन्होंने कहा, एक पहले कोशिश की है कि अगर हम जनरेट करते हैं हाइड्रोजन, बाय मींस ऑफ ए ग्रीन एनर्जी, आप जो जीरो का साइकिल है, नेट जीरो का साइकिल है, वो आप अचीव कर जाओगे. अब दूसरा क्या बोलते हैं, यह जो आप बनाने का प्रयास करते हो ग्रीन हाइड्रोजन, ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोलिसिस. और हाइड्रोजन जो मोस्टली प्रोड्यूस करता है इंडस्ट्री बाय क्रैकिंग मीथेन और नेचुरल गैस इन हाई कार्बन इंटेंसिटी प्रोसेस. हाइड्रोजन क्या है? लाइटेस्ट
हाँ blue hydrogen. हाँ, या क्या बोल रहे हो? दैट इज, हाँ क्या बोला भावना? So how they are producing hydrogen now, that is blue hydrogen. So that is Yes. the product hydrogen. So if you are Yes. shifting from producing blue hydrogen to green hydrogen. Yes. हाँ बोलो, हाँ बोलो. So we will have to think of sir, if we are shifting of production from blue hydrogen to green hydrogen, which is towards a net zero target, then we will have to think of electrolysis as a procedure, and whereby the Yes. storage of oxygen is also a safety issue, and it will lead to corrosion of the electrodes. So again, we will have to incur more cost on that. ये देखो, ये तीन चीज एक साथ मिला के कह रहे हैं. ये तीन बात एक साथ. आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही मेरी? यस सर. ये तीन बातें कह रहे हैं. एक, क्लीन एनर्जी. सेकंड, प्रोसेस की जो टेक्निकलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज है. आवाज आ रही मेरी? यस सर. ये तीन चीज कह रहे हैं. ये तीन चीज कह रहे हैं. नेट ठीक करे तो मैं भी. हाँ, ये तीन चीज कह रहे हैं. यस सर. हाइड्रोजन अगर हम बना ले जाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो उससे क्या होता है, हमको नेट जीरो प्राप्त करने में सहायता मिलेगी. दूसरा ये बात कहते हैं, हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस की टेक्निकलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी. तीसरा बात करते हैं इसके स्टोरेज को लेके. और चौथी बात करते हैं ये किस तरह से हमको हैजार्ड की तरफ लेके जाएगा. बस. और कुछ करें इसके अलावा? बताओ भावना. भावना कहाँ चलेगी? ज्वाइन कर रही है. आकाश, कोई और चीज करें इसके अलावा? नो सर. भावना, हाँ देखो, आप चले गए थे, आपका ऑफ हो गया. चार चीजें कह रहे हैं. आप इस चार चीज के आधार पे आर्गुमेंट हम लोग बिल्डअप करते हैं. पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोजन के सहायता से वी आर गेटिंग द क्लीन एनर्जी एंड द नेट जीरो. पॉइंट नंबर 1. ओके. पॉइंट नंबर 2, the making process and its complexity and technicalities. Next, हाइड्रोजन को अगर बना भी लेते हैं तो इसको कहते हैं स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना विद इन सेफ्टी मेजर्स आसान नहीं है. और लास्ट पॉइंट है, इसके हैजार्ड्स क्या क्या हैं. अब इन दिस बैकग्राउंड, आप ये आर्गुमेंट शुरू करो कि क्या हाइड्रोजन बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए. देखिए, अब इसको आप अपने इंटरव्यू की तरफ लेके आओ. ये आर्टिकल तो हो गया. आर्टिकल यही 4 बात कर, और कोई 5वीं बात तो नहीं कर रहा है. कैन मोर? Sir, that's all, sir. From the article, it is complete, sir. तो ये आर्टिकल हो गया. अब इस आर्टिकल के बाद हम आगे बढ़ते हैं. आगे Yes, ये sir. बढ़ते हैं कि इसको हम कैसे अपने एग्जाम में इस्तेमाल करें. पहला इस्तेमाल एग्जाम में क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए. बताओ अखिलेश, बताओ.
देखो इसका Sir, I आंसर was आपको not able to hear your question clearly, sir. हाँ देखो Can you please repeat the हाँ question? या क्वेश्चन इज दैट कि हम लोगों ने 4 पॉइंट इस आर्टिकल से निकाले। अब उस 4 पॉइंट पे हम आते हैं डिस्कशन को लेके कि आपने सवाल क्या होगा कि आपने सुना है हैंडवर्क में जो हाइड्रोजन के सारी समस्याएं चल रही हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ रेट टू इट। इन दिस बैकग्राउंड आर यू इन फेवर ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन? और आंसर बताओ। Sir, this Hindenburg gas tragedy which had happened in Germany, that was quite old, and right now we have advanced technologies compared with respect to the storage of hydrogen. So if we are opting for green hydrogen production, storage and using as fuel cell, then we should see the comparative advantage that we will get, how it would be helpful for the environment, and also whether we can sustain the cost that is involved in manufacturing, storage and transportation of hydrogen, sir. So if we are able to sustain the cost and we are getting a beneficial output, then we can go ahead with green hydrogen. Akash? Yes, sir. Bolo. Yes, sir. Although this hydrogen technology is initially like capital cost is high, but with if we focus more on research and development, then definitely we will reduce the cost for the production, as well as we are also we can also develop the technology which is more efficient in storing and transporting, as well as using this fuel, as well as we can uh, uh, achieve for sustainable development goal like climate change mitigation, as well as net zero carbon emission by 2050. Or sir, and as we have also limited the fossil fuel resources, so definitely we have to explore hydrogen, but definitely from the developing from the renewable energy like green hydrogen. So yes, sir, we have to focus on this. देखो पहली बात जो भावना ने कही बात आप आकाश आप भी ऐड करना कि if you are talking there's a Hindenburg issue, it's a very old issue, and it was in 1937 most likely. 1937 and 2022, almost 90 years, 85 years we have crossed. A lot of technology has been changed. Secondly, we are searching new avenues for the clean energy, and hydrogen is looking very powerful clean energy. We need to work more on this. We need to do more R&D on this, more research on this. The two issues which is being said that it is difficult to store and the transportation, that is solved in due course of the time. Therefore, the activity on the hydrogen, to work on the hydrogen is required. And if we are able to succeed, then our target of the net zero and the climate change is very much achievable. And it is the need of our to explore new ideas, new system, new technology for the clean energy. बताओ कुछ ऐड करोगे इसमें? Sir? So just for knowledge, there are hydrogen fuel powered cars also in Germany. Yes. And recently the railway minister has informed that we will be exploring green hydrogen powered locomotives even in India by the end of 2023. Yes, you add this. Because already there is a lot of progress. ये हम उस क्वेश्चन का आंसर तैयार करा रहे हैं when the interview board is opposing your hydrogen issue. How you support your case of the hydrogen. कुछ आकाश और ऐड करोगे इसमें? No, sir. Yes, Bhavana, हो गया है? हम बोलो. Yes, sir. Sir, there is another article, Stigma Scatters in Light. It talks about mental health issues. किसमें है? Indian Express में है, sir. Page number 15.
इसमें स्टिग्मा लगता है हमारे तुम्हारे पेपर को फर्क करता है क्या? आर्ट ये एडिटोरियल है क्या ये? Yes, sir. Page number 15. हाँ It is हाँ, there यस in the यस, bottom part. हाँ 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 हाँ, या इसमें क्या है? Sir, initially he mentions about the increasing rate of suicides. It is almost 13 people per lakh population, which is more than the global average. ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है. Even the city in Allahabad, we are hearing again the students are not able to cope up it. तो पहली बात तो क्या है, जो मेंटल हेल्थ है उसको सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन से देखना होगा. Before listening you, I am just trying to flag 3-4 points which will help you. पहला क्या हो गया? Yes, sir. सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन. दूसरा, अप्रोच कैसे हो मेंटल हेल्थ की केयर. कितने लोग मेंटल हेल्थ की केयर करते हैं? क्या हम आप करते हैं अपने मेंटल हेल्थ की केयर? आप खुद सोचो ना. Me, you, Akash, 3 person are here. How much we are taking care of our mental health? Just see ना. हम लोगों ने क्या सोचा है? हम लोग एक्सरसाइज करने को ही, वो थोड़ी होता है. मेंटल हेल्थ केयर इज अ डिफरेंट थिंग. नंबर 2 हो क्या? मेंटल हेल्थ. तीसरा, जो मेंटल हेल्थ है वो है इंटीग्रल पार्ट है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का. जितनी सरकार की पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम चलती हैं उसमें दवा दारू का इंतजाम तो है. what about the mental, what about the integration of the mental health in the public program? Next, स्ट्रेस के रिडक्शन पे कितना काम करते हैं हम लोग. लाइफ स्टाइल हम ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें स्ट्रेस कम हो. जैसे मैं भी आप लोगों को स्ट्रेस देता हूं. आई एम ऑल्सो गिविंग स्ट्रेस टू यू. रोज सुबह ये स्ट्रेस नहीं है सर. ये भी स्ट्रेस है कि रोज सुबह 4 आर्टिकल दे के शाम को 6 बजे काम पे लगा देना. ये भी स्ट्रेस है. ये स्ट्रेस जनरेट करता है. यू जस्ट ट्राई टू सी इट जनरेट्स स्ट्रेस. आई एम नॉट सेइंग दिस स्ट्रेस टेकिंग टुवर्ड्स ए डिजास्टर. आई एम नॉट सेइंग दिस, बट इट जनरेट्स स्ट्रेस. स्ट्रेस लाइफ में किस तरह का है ये समझने की जरूरत है. इट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस. दिस स्ट्रेस इज नॉट नेगेटिवली इंपैक्टिंग यू. Rather than this stress is diluting to another stress. You have one stress of the examination. This stress is diluting to that. Yes, sir. तो हम लोग स्ट्रेस पे अगर ये आपका ये सेशन बंद कर दिया जाए, आपका वो स्ट्रेस पैरामाउंट करने लगेगा. अभी आप 5 दिन लगातार सेशन न करो. आप देखो, नाउ यू आर यूज्ड टू ऑफ दिस सेशन. आप लगता है मेरा शाम का सेशन जो है मेरा काम कर देता है. आप इसको हटा दो. चाहे ये काम न भी कर रहा हो, आपके स्ट्रेस को जनरेट करेगा. तो नाउ रिमूविंग दिस सेशन इज जनरेटिंग योर स्ट्रेस. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस सोसाइटी में, समाज में किस तरह का होता है और हम लोग कितना, हमारा इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है. कोई आदमी डिप्रेशन में है, हम लोग उसको क्या सिंपैथी देते हैं? हम लोग उसको हैरेस करते हैं. आपके संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, पढ़ो. मेंटल स्ट्रेस के लिए कुछ लिखा गया है उसमें, हेल्थ के लिए लिखा गया है. यू कैन से इट इज द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग टू वर्क ऑन द मेंटल स्ट्रेस. नाउ यू स्पीक. आई वांटेड टू फ्लैग इट ताकि आपका जो डायरेक्शन है वो एक बन जाए. हाँ बताओ, अब आप क्या बताओगे? Sir, in this article, the author has outlined 4 major areas which we need to focus on. And sir, all of these were discussed by you. So there is nothing new in this article. So first one is the stigma around the mental health issues, how the society should be more sensitive and how that stigma in particular with respect to mental health issues should go.
The second major pillar is that it should be a part of public health program to reduce this mental disorders and illness. And also we should promote a healthy lifestyle, whether it is physical lifestyle or mental lifestyle. Both should be in integration with each other. And the third major pillar is that they should have a strong infrastructure for mental health care. Right now, India is facing a huge shortage of psychiatrists and mental health professionals. And no, even it is not being talked of in open also. Many hospitals also don't have a mental health specialist working for them. So this is a third major issue, sir. And finally, the last issue is about the affordability of the mental health care, whether it is affordable to everyone and whether we are having proper diagnosis and treatment for mental health care as such. So these were the issues which were mentioned in this article. एक तो भावना जो सुसाइड की टेंडेंसी है ये मोस्ट ऑफ द पीपल में होती है। हम हो, आप हो, आकाश हो, आपकी माँ हो, कोई हो, एक ये जनरली होती है टेंडेंसी। वो कितनी कम मात्रा में है, कितनी ज्यादा है, यह डिसाइड करती है उस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ। तो ये साइकोलॉजिकली इस बात को एनालाइज किया गया, आप इसको थोड़ा और पढ़ना, कि जो सुसाइड की टेंडेंसी व्यक्ति में होती है। आप देखो ना, कई बार आदमी बोलता है यार मर जाते तो अच्छा होता। आप याद हो, ऐसा आपने भी कभी कहा होगा, सबने कहा होगा, यार मर जाते अच्छा होता, जिंदगी बेकार हो गई। ये कहां से आता है? वह उसी सबकॉन्शियस से निकलता है जहां पे सुसाइडल टेंडेंसी के कहीं न कहीं पे सीड्स होते हैं। अब देखिए, उन्होंने 2-3 इंटरेस्टिंग कहते हैं फैक्ट्स लिखे हैं। 12.9 अपॉन 1 लाख जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा है। आप बस एक फिगर याद रखो, बहुत अगर याद रख सको तो। दूसरा, एज गैप, एज ग्रुप 15 to 29 ईयर्स, वेरी फर्टाइल एज। जो आदमी समाज के लिए बहुत उपयोगी है, उसमें 1 लाख में से क्लोज टू 13% सुसाइड करना चाह रहे हैं। तीसरा, एक पेंडेमिक ने जनरेट किया है, जो कोरोना वाला है उसने बहुत जनरेट किया है। और एक सवाल ये हमेशा होना चाहिए, जो यंग ग्रुप है। अब एक सवाल इंटरव्यू पूछ सकता है कि आपने मुझको 2 फैक्ट समझाए हैं कि 1 लाख में 13 लोग हैं और 15 to 29 है, ये यंग ग्रुप क्यों कर रहा है? व्हाई, व्हाट्स द रीजन? ये बताओ आकाश, यू एड्रेस दिस इशू। व्हाई यंग जनरेशन इज गोइंग, व्हाई यंग गोइंग फॉर इट? Sir, I think first is our education system. Like it creates so much stress on the student, as well as, sir, there is a stigma attached to the mental health. Like normally young people are not able to seek timely treatment of these issues, as it is like thought as a shameful thing. Sir, second is there is a lack of employment opportunity. It also creates stress among youth. And sir, there is structural issues, like for example affordability and accessibility of psychiatrists. Like these like psychiatrists are like for the elite people and not like for the general. So that's why, sir, I think the accessibility and affordability is also one issue. And yes, sir, that are I'm able to analyze. आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रेस नहीं जनरेट कर रहा है। 15 से 29 साल की उम्र में जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो लोग, उसमें एक बड़ा सेक्शन वो है जिसको हम नंबरों के पीछे दौड़ा रहे हैं, जिसको हम आईआईटी, पीएमटी, आईएएस, पीसीएस की तैयारी के पीछे दौड़ा रहे हैं। उनसे वो स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा है। उनको हम काम पे तो लगा देते हैं, हम उनके स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं? क्या उन बच्चों से कोई संवाद करता है? इज देयर एनी डायलॉग? कोटा में बहुत बच्चे करते थे आत्महत्या। क्यों करते थे? बोलते थे वो बच्चे अकेले में एकदम लोनलीनेस रहते थे, उनका आउटबर्स्ट नहीं होता था। बोलते हैं स्ट्रेस को, कहते हैं सुसाइड को रोकने बड़ा कारण, बड़ा रास्ता क्या है? आप उससे बात करो। दूसरा बोलते हैं स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बड़ा रास्ता क्या है? यू टॉक टू द पर्सन, गिव हिम द आउटलेट टू स्पीक, गिव हिम टू आउटलेट टू एक्सप्रेस। डज सोसाइटी इज डूइंग दिस? For that, we need the counselor. How many counselors we have in the large population of the area where is no proper medical facilities available? क्या किसी गांव के हॉस्पिटल में, पीएचसी में कोई काउंसलर, कोई साइकाट्रिस्ट है?
क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर मोर कंसर्न पोलियो, खसरा, कहते हैं चेचक, डेंगू, बुखार. वी आर मोर कंसर्न विद दिस. यस, ट्रू, we need to handle, but what about the other disease which we are not able to see, which needs examination? तो एक तो आप इसको फ्लैग करो अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ. दूसरा, हम लोग बच्चों को बहुत ज्यादा पुश करते हैं. तो लास्ट पैरा है. हाँ, बोलो बोलो. Sir, can we say that the changing social situations and the generation gap, which leads to a lack of understanding between the needs of the Yes. present generation with their parents, Yes. and also it increases the expectations. So because Yes. of increasing expectations from an individual, it can be either from the society or even increasing expectations from himself, that can lead to Yes. depression, which would ultimately lead to suicide. सोल्यूशन क्या है इसका? ये जो आपने फ्लैग किया इशू, सोल्यूशन. हाँ, या बोलो बोलो. Sir, can we say that social media is also one factor which is creating relative deprivation among youth, like comparison lifestyle, and that's why they feel Yes. they are. So, sir, and Comparison relatively rising. देखो, अननेसेसरी कंपैरिजन हो रहा है. Sir, आपका 80. या yes, sir. Yes, sir. हाँ, बोलो. Sir, and can we say that there is a rise of individualism, like due to the rising economic opportunity and due to globalization, the world is like entirely connected. So people are much like there is a like dissolution in nuclear family to joint family to nuclear family, as well as person are very much individualistic. That's why they are normally isolated from the wider society, and they are living in virtual world, which is also creates mental stress and trauma. थोड़ा इसको और रिफाइन करो आकाश. ट्राई टू मोर. आकाश, सेम बात को जरा और रिफाइन करो. ट्राई टू रिफाइन इट. Yes, like the causes for the suicide for the different group is different. Like I'm telling that in a elite group there is also tendency of suicide due to the isolation, due to the relative deprivation. So sir, that's I point. Okay. Like to raise. भावना बताओ. भावना. Yes, sir. Sir, sir, if I have to tell on what Akash said, then I can say that it is because of social media and peer pressure, which in fact brings a sense of that fear of missing out. So this also causes depression and the tendency to suicide. Another major impact is that the life that they are living on social media is very different from the realistic life picture. So there is an extreme pressure to match the standards. So because of this also, it leads to depression. Okay. मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट we have thought. हाँ, बोलो. Sir, one major question, sir. Yeah. बोलो. Yes, sir. Sir, in urban area, yes, in urban area, youth are tend to incline towards much more towards like video games and social media, and not spending time with family and other peer group. So that's why, sir, also there is some creation, like for example, whale game was responsible for the suicide in young people. So, sir, I think due to the dissolution of relationship between the child and parents or with a wider family group, it is also, sir, creating some sense of isolation and alienation. It is also, sir, creating a suicidal tendency among the youth, sir. ये आप कह सकते हो ना कि संवाद नहीं हो रहा है, डायलॉग नहीं हो रहा है. Sir? Earlier, हाँ. Yes. Sir, instead of thinking only from the perspective of the younger generation, sometimes even the old, like our parents' generation, they don't have time to spend with their children, especially at the age when they need the most. If both the parents are working and the students are and their children are studying,
then they find it very difficult to manage time for their children. So even because of that, they will not find anyone who is close to them to vent out. So the problem is at both sides, sir. इसको कैसे कहोगे बताओ? How you will structure? आपने फ्लैग तो किया, how will you structure it? Sir, because of a lack of time, or because of time crunch wherein the children are not able to speak and vent out their feelings to their parents. So because of this, it can lead to pressure build up among the children, which might lead them towards suicide. इसको आप अगर यहाँ से इनिशिएट करो कि सर we are missing the communication and dialogue. The reason may be the shortage of time, too many occupations in the life, generation gap. Due to that reason, we are unable to understand each other. If the child is going in the depression phase, we are unable to notice it. If the right time the depression is being caught, then it's very high probability that extreme step may be avoided. So sir, as per my mind, the dialogue is one of the best solution of this process. Sir, what counselor does? What counselor do? He or she only talk and allow the person to open up. Earlier, every family has the counselor. Mother counsels, brother counsels, grandmother, grandfather. Because they speak, they talk, they vent their grievances, their frustration, their disappointments. But right now, that process is not available to us. Secondly, we have not yet recognized the mental problem. Even the person who is well established, who are educated, they are also not aware of this issue. And the counselor needed for this, an expert needed for this to help. There is no health without the mental health. The universal health coverage program will not be achieved, is not going to be completed until we ensure that mental health is the integral part of the health. To cure the mental health is a long drawn process in comparison to the physical health. तो इसको आप स्टार्ट करना डायलॉग से, क्योंकि आप चाहे जो आर्गुमेंट करो वो डायलॉग पे ही जाएगा. काउंसलर करता क्या? डायलॉग ही करता है ना. डायलॉग करता है, आपके अच्छी बात करता है, आपको समझाता है, करता है ना. वही हम लोगों के टाइम में ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, अपनी माएँ करती थी, बड़ी बहनें करती थी. इसमें महिलाओं का रोल भी आप ऐड कर सकते हो. जनरली घर की जो महिलाएं होती हैं वो बेहतर काउंसलर होती हैं, हर घर की. इन कंपैरिजन टू द male, the female are the better counselor. They have the more patience. मान लो लड़की है, वो किसी मेल से ओपन, इमेजिन सिचुएशन, एक लड़की के साथ इवटीजिंग हो गई, उसके साथ इनडिसेंट बिहेवियर हो गया, वो आदमियों से बता ही नहीं पाएगी. फॉर दैट यू नीड ए लेडी. तो जो महिलाओं का जो रोल है इसमें बड़ा इंटीग्रल पार्ट है. तो हमारी घर की महिलाओं को, उनको भी इसमें काम करना होगा. तो ये एक इशू, एक होलिस्टिक इशू है ये. और बताओ कुछ इशू? आकाश, कुछ और है इसमें? Sir, there is one aspect that we have to focus on vulnerable groups, especially like marginal farmers, armed forces, unemployed youth, students, yes, etc. Yes, good point. Yes, very good point. Okay, we need to identify the vulnerable group, sensitive group. ये आप करो ना आकाश? Yes sir. Yes, ठीक है. अच्छा पॉइंट है ये, अच्छा पॉइंट है. हाँ, बोलो. How to diagnose that a person is suffering
from mental health issues. Even an individual can never know that he is suffering or he needs help. Or how will the society come to know that a person is suffering from depression? Nobody would come to know. So in that case, it goes unrecognized. ये भी अगर आप ये कहो कि मेंटल हेल्थ के इशू को कि करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, क्या खराबी है? बोला सर यही आदमी उसको बताया जाना चाहिए। और इसको फाइनली तो डायग्नोज कोई एक्सपर्ट ही करेगा, लेकिन अगर फैमिली में अगर कोई पर्सनालिटी में एबरेशन है, उसको आप नोटिस करो। द मोमेंट यू आर नोटिसिंग एनी एबरेशन इन पर्सनालिटी, यू इमीडिएटली रिपोर्ट टू द एक्सपर्ट। बोलो सर कई बार पर्सनालिटी एबरेशन समझ में आने लगता है, लोग इग्नोर करते हैं। मान लो कोई आदमी 3-4 दिन से उदास घूम रहा है, खाना कम खा रहा, किसी बात नहीं कर रहा है, एक कमरे में अपने को लॉकअप करके रख रहा है, तो ये एक एबरेशन हो गया ना। कौन नहीं चाहता लोगों से बात करना, मिलना, खाना खाना, घूमना टहलना, कौन नहीं चाहता? अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो पर्सनालिटी का ये एबरेशन है ना। यू एड्रेस दिस। और कुछ? Yes, sir. No, sir. हो गया? नेक्स्ट क्या है? Sir, Indus treaty notice to Pak. हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें क्या है? आकाश पढ़ा दे इसको आपने? आकाश? Yes, sir. पढ़ा? बताओ, कुछ बताओ। Sir, there is no any article regarding, I think, in this. एक्सप्रेस में है ये, इंडस ट्रीटी नोटिस टू पाक। Okay, sir. एक ओल्ड ट्रीटी हुई थी इंडिया पाकिस्तान में वाटर को लेके। Yes, sir. इंडिया उस पे अपना ऑब्जेक्शन कर रहा है, ये इसमें है। चलो भावना अब बताओ। चलो Sir, Pakistan has repeatedly flagged concern about our projects, hydro water projects, which are on the river Chenab and also on the river Kishanganga. And what Pakistan has done is it has taken course to two parallel ways of handling the issue. So one is that they have gone directly to the arbitration council, and India has in fact said that this would we should first take recourse to the internal measures that are available at the level of the treaty only. So India has again put this up before the internal treaty only, the appointment of a neutral expert. So India has opted for that route, whereas Pakistan has put it up before the court of arbitration. So now there are two parallel cases which are going on for the same issue, sir, and which is not being provided for by the treaty. So this is the issue which is happening. And right now, India has sent a notice to Pakistan that the repeated objections to these particular dams and the treaty as such. Sir, so it is, sir, but then the implications of this notice are not clear, like as to what will happen in future. क्या है ना, बेसिक इसमें सवाल बहुत अच्छा, बहुत I did not understand, sir. I did not understand. हाँ, इसमें बहुत सवाल बने जो क्या है कि जो इंडिया का नोटिस है, जो इंडिया मॉडिफाई करना चाह रहा है ट्रीटी, वो क्लियर नहीं है। इंडिया क्या करना चाह रहा है क्लियर नहीं है, साफ इसमें उन्होंने लिखी दिया है। आर्टिकल 12(3) of the treaty that India has invoked is not a dispute resolution mechanism. It has in effect a provision to amend the treaty. About Article 12(4) पे provides for the termination of the treaty through a similar process. India has not spelled out what it wants. इंडिया क्या चाहता है, हाँ ये पता नहीं है। अब इंडिया ने अपना राइट पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया है over the waters of the 3 east flowing rivers, Ravi, Byas and Satluj, जिसके ऊपर full control under the treaty दिया गया है. It is also not adequate to utilize the limited rights over the 3 west flowing rivers, Indus, Chenab and Jhelum, which are meant for Pakistan. तो इसलिए इंडिया वर्क कर रहा है to start several big and small hydro projects that had either been
installed or where in planning stage. तो इंडिया क्या चाह रहा है यह क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह बहुत लिमिटेड टॉपिक है, इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ लेके चलते हैं, शायद उससे कुछ बात समझ में आवे कि जो ये वाटर डिस्प्यूट है ये किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, ये बताइए। अब आर्टिकल से आप इसको निकालिए, बताओ। Sir, I did not आप- understand the question, sir. What there is a water dispute between India and Pakistan. How it is going to impact the international relation? Sir, till now we have been following the spirit and letter of Indus Water Treaty, and even in very uncertain times like Uri, Pathankot, and Balakot strikes, also the water supply to Pakistan was not stopped. But however, such repeated issues of instigation from Pakistan, it might in fact force us to take any other measures in future, sir. इसको क्या है भावना, इसको हम लोग और पढ़ते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच के वाटर डिस्प्यूट को, ठीक है ना, थोड़ा इसकी स्टडी करते हैं, देन वी डिस्कस, क्योंकि इस आर्टिकल से आगे डिस्कस नहीं हो पा रहा है, मैंने आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल कुछ खास कह नहीं पा रहा है, तो लेट्स वी ऑल थ्री रीड द इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट और द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देन विल डिस्कस दिस एस्पेक्ट। ठीक एस्पेक्ट इसलिए लग रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताओ, बोलो। Sir, in relation to water dispute, we can think about the water dispute between China and India. यस, आके इसको हम होलिस्टिक कर लेते हैं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश सब कर लेते हैं, तो हम लोग एक दिन थोड़ा इसको हम भी पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लेते हैं, इससे हम लोग इसको वाटर डिस्प्यूट को हम कर लेते हैं। आकाश आप भी इसको पढ़ लेना बेटा। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्या बताओ। Sir, in Hindu, there is an article on the president's speech, customary address to the nation on Republic Day. ओके, क्या है इसको बताओ। Sir, in this, the main crux of the speech was India should be proud of its diversity. किस And in पेज पे fact, है ये? India has, sir, किस page पेज पे number है ये? 6. Page number 6, founding ideals. हाँ या बताओ उस क्या है। Sir, in this, the main point was that when we were fighting the British imperialism, we not only got our independence, but we also rediscovered our own self and the essence of India, our own ideal. And we have succeeded mainly because of the diversity and the culture, and also because of so many languages, so many different aspects of culture, and they have united us and they have not divided us. One more aspect is about the principle of Sarvodaya and Atmanirbharta. So Sarvodaya will stand for social and economic justice, and even Atmanirbharta. So these were the main aspects of this speech, sir. बेसिक क्या है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, जो जगदीप धनखड़ कह गए थे उसी को उन्होंने एक दूसरी तरह से कहने की कोशिश की है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर ध्यान दिया जाए। आप लास्ट पैरा देखिए ना उनका, Mrs. Murmu reiteration of the founding principles of the Republic and her reassurance to fellow citizens come at a time when the sanctity of the Constitution is under attack. While debate about Constitution is also part of democracy, it establishes adherence to its basic principles, what unifies the people of India, that she pointed out. तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं की जो आप नहीं जानते हो, बहुत सिंपल सी बात की उन्होंने। और क्या इसके अलावा? Sir, there is article on moral and intellectual crisis in economic policies, but I did not quite understand this article, sir. वो काम कर रही है उसमें, अरुण मेहता का है, कुछ काम कर रही है। क्या है ना, जो वो क्या कह रहे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए दे, डिग्निटी दे, फलाना दे, धमाका दे, वो तो बहुत खास आम बात है ना। आप कंफ्यूजन इन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज लिख दी है, उससे मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर डिस्कस किया जा सके, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दी जानी चाहिए ना, वो तो बात ठीक है ना। अब जीडीपी ग्रोथ का डाउन साइड उन्होंने बोल दिया है
कि जीडीपी ग्रोथ क्या है, इज लाइक ए डिसीज। अभी ये आप कहां से कह सकते हो? इट किल्स द इकोनॉमी। नहीं कुछ काम का नहीं इसका, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप उसको इंटरव्यू में कोई इस्तेमाल कर सको। Then in this, I got one confusion when he says that more Indian women have been working outside their home, but still their contribution to GDP is not calculated, and that is one of the reasons why we are saying that women labor force participation is less. एक बात क्या है, देखिए इन्होंने बात तो ठीक कही है। जब महिलाएं जो घर में काम करती हैं तो जीडीपी ग्रोथ में क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है? भाई अगर महिलाएं घर में काम कर रही तभी पुरुष बाहर काम कर पा रहा है। तो यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ द वुमेन हु आर हेल्पिंग टू द पर्सन टू वर्क आउटसाइड। मान लो एक पति पत्नी है जो एक मिनाइल जॉब करता है, आदमी जाके बाहर कहते हैं एक लेबर की तरह काम करता है, 500 रुपया रोज कमाता है और घर पे बच्चे औरत रहती है, बच्चों को पालती है। अगर वो बच्चों को न पाले, घर पे न रहे, तो क्या आदमी बाहर जाकर काम कर सकता? नहीं कर सकता है। तो इन द 500 rupees earned by the man, what is the contribution of that lady who is at home? If she will not support, how the person work outside? So why this contribution is not being calculated to the GDP? What is the calculation of GDP? Ultimate earning by a person. The person who is helping to earn, where is her contribution? बात ठीक बोल रहे हैं ये कि आप सिर्फ बाहर जाने को ही कर रहे हो, जो सपोर्ट कर रहा है उसका क्या है? She is also contributing the GDP in another way. लेकिन उन्होंने क्या जीडीपी के कैलकुलेशन के थ्योरी को चेंज करने की बात कही है। Yes, sir. तो जो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी में थ्योरी में जो जीडीपी का कैलकुलेशन है, और उसमें ये भी किया जाना चाहिए। बात तो ठीक है, बोले आप ठीक है, आप कह सकते हो कि सर आई एम इन एग्रीमेंट विथ इट। यू कैन नॉट से द गर्ल हु इज एट द होम, who is not working outside home but supporting the person is also contributing in the GDP. Got it? Yes, sir. Sir, in that case, the entire should be calculated. Yes. बोलो सर द रोल ऑफ, आप इसको आप इस तरह कह सकते हो कि सर आप नॉट सेइंग यू चेंज द हाउ टू कैलकुलेट द जीडीपी, बट देयर रोल नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड. It is, if you are saying that women have no role in the GDP, it's not true. They have the role in the GDP because that person is earning because of only of her support. You withdraw the support. Suppose a woman is not at home. Suppose a person has married a girl. Girl has produced the two children. She has died. One person you are employing for taking care of that two children and you're cooking. You will pay something to him. So it is the contribution. But a girl to whom you are not paying is not contribution. So sir, society need to recognize, I'm saying this. Sir, then how can we make our GDP, or is there any other measure which will include even the care economy? No, I'm not saying, sir, you change the calculation of the GDP. I'm just saying that the one phenomena that the girls are not contributing the GDP because they don't work outside, sir, it's not fair. They are contributing indirectly. Their role is being calculated or not being calculated, but their role need to be recognized. It is better argument. अब जीडीपी का कैलकुलेशन वर्ल्ड वाइड एक ही तरह से होता है, वो तो चेंज नहीं होगा ना, लेकिन आपका आर्गुमेंट तो स्ट्रांग है ना सर, उनका रोल तो है ही ना सर, ये नहीं कहा जा सकता. When any person is analyzing the role of the women in the society or in economy, he or she should account for this.
सर इसमें सर्वे भी किया जा सकता है ना, देयर इज सो मेनी सर्वेज गोइंग ऑन, दिस सर्वे आल्सो कैन बी डन कि हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग, इट विल कम आउट. और कुछ इसमें? So the next article is India's groundwater governance. Groundwater governance. No, sir. ये भी अच्छा, ये भी अच्छा है. Yes, sir. लेकिन इसमें आप ज्यादा चीजें आप जानते हो, इसमें आप ऐसी बताओ जो आप नहीं जानते हो. चलो बताओ, स्टार्ट करो. आकाश आप पढ़ा है बेटा? Yes, sir. हाँ, अब आप शुरू करते हैं. Yes, sir. So basically, this article talks about how we improved our groundwater table with different government policies and intervention. For example, author tells about Atal Bhujal Yojana, which is looks to inculcate severe change in the society and to incentivize and to manage groundwater table, and national project on aquifer management, as well as the campaign like Catch the Rain campaign, etc., and the formation of Jal Shakti Ministry to recognize this issue and to solve this issue much efficiently. And so it's talked about how government has developed like network and how it used technology to monitor the groundwater table, as well as to the quality of groundwater, as well as mapping and data creation to manage these resources much efficiently, as well as create awareness among different stakeholders through Gram Sabha and through NGO. And basically, this article is very optimistic that India is doing well with regard to managing its groundwater resources, but we have to focus on more for the sustainable use of groundwater, and communities and other stakeholders must be taken to participation to manage these water groundwater much efficiently, sir. Okay, भावना बताओ. भावना? First, it talks about the. Yes, sir. Yeah. बोलो. Sir, am I audible? हाँ, आवाज आ रही एकदम आ रही. Yes, sir. So, firstly, it talks about the importance of groundwater for irrigation as well as for drinking purposes. And almost 70 to 80% of water needs are being met by the extraction of groundwater. But India being a diverse country, having such a large population, we were moving towards groundwater depletion. But because of the interventions by the government in having a separate groundwater policy, and also taking up Atal Bhujal Yojana and projects, national aquifer management projects. So these projects have yielded fruit, which has in fact improved groundwater levels, and it has also reduced the water extraction and exploitation, sir. So with more such kind of measures, we can move toward more sustainable usage of water. थोड़ा से इस आर्टिकल के बियॉन्ड जाओ. पहली बात तो इंडिया की ग्राउंड वाटर की सिचुएशन कैसी है, आप इसको जोड़ो फ्री इलेक्ट्रिसिटी से. पंजाब में लोगों ने पूरा ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर दिया है. फिर आप चेन्नई से जाओ, चेन्नई में ग्राउंड वाटर की हालत बड़ी खराब है. चेन्नई डाइंग सिटी, हम लोग कल परसों बात किए थे, लोग कहते हैं पानी की हालत बड़ी खराब है. फिर आओ नेक्स्ट पॉइंट पे कि व्हाट शुड बी डन. तो एक तो बोलो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे कंट्रोल होना चाहिए और अननेसेसरी वाटर पे कंट्रोल हो. जो वाटर गजलिंग क्रॉप है उस पर थोड़ा से मॉनिटरिंग होनी चाहिए. रेन हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी का जो कलेक्शन है बहुत जरूरी है. हमारे गांव में तालाब खत्म हो रहे हैं, तालाबों का रेस्टोरेशन होना चाहिए. आप ध्यान दो, गौरैया अब दिखती नहीं है आपको, जो चिड़िया गौरैया दिखती नहीं है. क्यों? तो अगर हम वाटर हार्वेस्ट करेंगे, I did not understand, sir. yeah, if you see
तो जो एक बर्ड नहीं होती है जो जिसको बोलते हैं गौरैया, चिड़िया, याद नहीं है? छोटी छोटी बर्ड्स, गौरैया क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पैरो। हाँ स्पैरो, हाँ स्पैरो। स्पैरो कहाँ दिखती है? इफ यू सी हाउ मच स्पैरो यू आर एबल टू सी इन द योर चाइल्डहुड, हाउ यू मस्ट हैव सीन देयर लॉट ऑफ डिफरेंस। क्यों नहीं दिखती हैं? तो आप ग्राउंड वाटर को क्लाइमेट चेंज से जोड़ के लेके जाओ। एक्यूफायर्स खत्म हो रहे हैं मेरे। अगर आप ग्राउंड वाटर को, एक्यूफायर्स को वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इट विल नॉट ओनली हेल्प द ड्रिंकिंग वाटर, इट विल हेल्प द क्लाइमेट ऑल्सो। जिन शहरों में बहुत ज्यादा लेक होते हैं, वाटर कहाँ पे जहां जमाव होता है, दैट सिटी हैज ए लेस टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज। तो एक तो आप इसको, हाँ दूसरा जो इंडिया की जो पॉलिसी है ग्राउंड वाटर की, वो आप देखो। जो एक उन्होंने बोला है कि हम 2024 तक, कब तक सारे गांवों को हम टैप वाटर देंगे, वो आप कर दो। रीयूजेबल वाटर, जो वाटर हम वेस्ट करते हैं उसको हम रीयूज करते हैं, हमने इस काम शुरू किया हुआ इस पे। सोर्स सस्टेनेबिलिटी, जल जीवन मिशन क्या बोलता है कि हम इंश्योर करें सोर्स सस्टेनेबिलिटी टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024 अंडर द जल जीवन मिशन। और जो आकाश ने बोला बड़ा पॉजिटिव कहा ही है। तो एक बेटर हमको गवर्नेंस करना होगा जो क्लाइमेट की सारी समस्याओं को इंक्लूडिंग द वाटर क्राइसिस को साथ लेके चल सके। यही मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं ये। हाँ बोलो। And another point is that we should have region-based solutions, because the kind of geology in South India is very different from the kind of geology in North India. In South India, it is a hard rock. Yes. And the aquifer, once depleted, it will be very difficult to get it refilled. So chances of water depletion or extraction in South India are more harmful and disastrous in future. इसको आप इस तरह से आर्ग्यू करो कि every region has their own separate problem. Therefore, this issue need to be handled with a specific problem faced by the region. Now you come on your South India. How the rocks are there, how the system is there. पंजाब की प्रॉब्लम अलग है, साउथ इंडिया का, चेन्नई के अलग है, पंजाब के अलग है, दोनों अलग अलग ढंग से देखना चाहिए। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पॉलिसी के तहत रीजन वाइज एनालिसिस की जानी चाहिए। Yes, sir. So, and another aspect in groundwater, especially in cities like Bangalore, they are even charging for they are contemplating to charge groundwater extraction charges, like to fit a meter, so that it will at least reduce the. वो sooner or later हर जगह आएगा. It will come. You cannot claim the water without the price. It is not possible. अहमदाबाद में भी है. Everywhere it is. Or nothing wrong in it. Yes, and nothing wrong. So that can be a solution to at least reduce the exploitation of water. बोलो कि सर चार्ज तो होना ही चाहिए. बोले गरीबों के लिए, बोला सर अगर गरीबों को देना है तो गवर्नमेंट टेक अ पॉलिसी, इज अ डिफरेंट इशू. If government wants to pay, that's a different issue. But everyone has to pay for it. If there is a vulnerable section, they are not able to afford it. Government want to subsidize, government want to pay it. Sir, that is a different aspect. That is right or wrong, we can discuss separately. But everyone has to pay the price of the water, price of electricity, price of the clean air. You have to pay it. Otherwise, from where the state will secure this? How the state will afford this? और बताओ. Sir, one is with respect to global best practices. What we can learn from Israel in water management, in recycling of wastewater, and in micro irrigation and drip irrigation. Very good example. Very good example. Yes.
Note down this. Very good example. Sir, that's all, sir, I think. हो गया चलो जितना आज टाइम लगा ना 90 मिनट, इट्स वेरी आइडियल। आकाश कुछ और है बेटा? आकाश, Yes, आकाश कुछ और है? नहीं sir, he is the problem. भैया तो ठीक भावना, कल हम लोग शाम को फिर मिलते हैं तो बेटा। Sir, ठीक है। Akash, sir, Hmm? sir. हाँ आकाश, अच्छा चला गया वो आउट में। ठीक भावना, विल सी यू टुमारो अगेन। हेलो हेलो भावना, आपका चला गया नेट। Sir, भावना? I'm here. हाँ हाँ तो ठीक है, हो गया आज का, तो कल मिलते हैं, विल सी टुमारो अगेन। Yeah. Yes, sir. ओके बाय Thank बाय you, sir. बाय।